these desulfurization processes can be divided into two types. First is actually the absorption technique. Second is actually the adsorption. So in adsorption, we use the solid bed sweetening process. So today we'll be discussing this first iron sponge process, which is actually a solid bed sweetening process, followed by another solid bed sweetening process, which is molecular sieve. So we will see how do we perform the adsorption of natural gas on solid surface using these two methods. So how do we sweet the natural gas? So this is actually the adsorption technique. In absorption, it may be chemical, as I told you, which is better and the most often used technique to perform desulfurization. Another one is actually the physical. In physical, the absorption is like, for example, we are using water wash or Selexol. So in this, the absorption will be through absorption. Here, the sweetening will be performed by absorption. So this technique is called the liquid technique. Okay, and the other one is actually the solid technique. So let us start one by one. What are the important properties of these methods and how do we perform sweetening of the natural gas or desulfurization? So first, let us discuss the solid technique, in which we will discuss first iron sponge process. So I guess this slide is visible to every one of you. Which has iron sponge process name. Okay. So in iron sponge process, we have a absorption column of. Okay, I'll go very slowly, Amir, to minimize this lag. So in this, you see at the bottom of the slide, there is a absorption column. So in absorption column, you will see there is a pack. So in iron sponge process, we use wood chips, usually wood chips. So these wood chips actually are impregnated by the ferric oxide. Okay, because it has been understood that ferric oxide and H2S gas has a very good affinity. So this H2S, when it comes into the contact of ferric oxide, it immediately gets absorbed and make ferric sulfide and water. Okay, so that is actually the iron sponge technique, which is performed by the ferric oxide and adsorption through adsorption. So how do we perform adsorption? These solid chips, these solid wood chips are coated by the ferric oxide. So the gas is coming from the top and it passes through this in zigzag way. Therefore, we are providing this as a pack. You will have the zigzag way motion here. So when it goes into this, it gets absorbed on the surface of the solid chips, and below this you will have the sweet gas outlet from here. Now from the top you are also seeing two ports. One is this aeration port and another one is actually the inlet port for the shower gas. So but along with shower gas you can also see there is one more H2O. Okay, so this H2O is just used along with the natural gas to perform this adsorption process. So this is actually the brief introduction about the iron sponge method, but this is the definition you can see here. Uses the chemical reaction of the ferric oxide with H2S to sweeten gas stream. The process is applied, yes, with low H2S concentrations. I'll tell you this, operating at this pressure range only. Yes, carbon dioxide is not removed by this process. So this process, iron sponge process, is a selective. Please note this, it's a selective sweetening process only designed for H2S. So if you are not having good amount of, if you don't desire
to remove CO2 from the natural gas. Iron sponge method is very good method, but still, why? What could be the main problem with the method? Because we are using solid chips. So once H2S gets absorbed on these solid chips, there may be a limit of saturation also. There may be a limit of saturation after which the absorption scheme will not work. So this may be the one of the limitations with this iron sponge technique. Therefore, this method is very good for low H2S concentrations up to 300 ppm only. So what are the important highlights from this method? This is first solid method, which actually allows the absorption of H2S on the ferric oxide coated wood chips. Okay. Second, it can only remove H2S, not CO2. Third, it actually is designed for the low concentration of H2S in the natural gas. This is one method. But what is it there in the regeneration process? Because I can also understand from the diagram, these wood chips, when they are not capable to absorb further H2S, then we can we regenerate these wood chips? So for that, what we do, we need to remove H2S from here, and then if you can remove H2S from the surface of the wood chips, then they will be regenerated with the full amount. But the problem is, the question is, can we regenerate them up to their original condition? So therefore, this process by the time becomes ineffective, because regeneration up to the initial stage is always not possible. You can remove some amount of H2S from the surface by heating the chips. So when we heat them, the H2S actually gets removed from the surface of the chips. The notes based on these techniques will follow, but whatsoever I'm actually discussing here, you can ask me whenever you have any doubt. So the problem from the diagram itself seems that when we have like suppose chips, they are coated by H2S. So there is also a possibility to regenerate chips by removing H2S from the surface. Yes, we have a question here. Is what happens at high concentration? Yeah, this method is not designed for the high concentration of H2S, because for high concentration of H2S, we will discuss another methods, probably liquid technique, but this solid method is for the low concentration of H2S up to 300 ppm. Now I can tell you this, because why it is for low concentration, because of the capacity of the absorption on the solid chips. Yes, if you can actually have suppose if you I'm using chips here. So if H2S is going to absorb on the surface, there may be a limit after which no more absorption can be actually achieved on the chips. Therefore, what you do, you will either increase the length of the absorption column, okay, or sir, can you explain the process through the diagram? So diagram, yeah, diagram is here, Amir. So this process, let me make share the whiteboard here. This is the absorption column where I have the wood chips, the small wood chips. They are filled like this in a pack. So I have a pack here, and if you look at the chips look like of a very small size, which is coated by the Fe2O3. So this is called the impregnated chip by Fe2O3. So what we do, we allow the gas to come from the upper side, and this gas goes in downward direction, moving through this. So it is expected when we remove gas, when gas goes from the outlet of this pack, it is actually entirely sweetened. Okay, but as Brigya asked, this is only possible when we have a low concentration of H2S. Okay, because this method is limited to the, first of all,
length of the absorption column. I cannot have huge amount of the length of the absorption column. Second, this method is also actually limited to the pressure losses within the chips. Third, the chips which I am using here, they are limited to the surface. So after absorption of H2S, in one round, then there may be a limit of saturation, that after that no more H2S will get absorbed. So there are three answers to this solution. Either you may use the long amount of the wood chips or long length of the wood chips within the absorber. Then again we may touch the limit of the industrial requirements. Third, you may have suppose this process in number of batches. So how can you do this? You may use three absorbers in parallel. So how can we achieve this? That after sending this, the gas may send to the another absorber column. Again from the bottom, the gas may again send to the another absorber column. So this is the iron sponge method, but these methods are again will increase the amount of the capital investment, or it may also touch the industrial requirements, or second, that this is not allowed simply because we don't have the provision to have three absorption columns in parallel, or we can not also increase the length of the absorption column. So what we do, we will remove these chips from here. Okay, we will remove these chips, then we will install the another pack of the chips. So therefore, this method is only limited to the low amount of H2S in the natural gas. Second, this is not used for CO2. Please note for this. This is not for a CO2. This is only for H2S. So let me go back to the initial diagram. This diagram is more explanatory. So in this diagram, there are 4 ports. From the top, you can see that we are actually sending the gas in the downward direction in iron sponge media. So this is actually the pack. Okay. What is the reaction here? Reaction is here. So when the gas, this H2, this char gas comes into the contact of ferric oxide, it has very huge amount of selectivity for H2S only. Okay, for no other component. So when H2S comes in contact, it converts into the ferric sulfide. So this ferric sulfide will be now on the chips. So what can we do if you can afford the replacement of the chips, and if you can install the new pack, then it is also better. Otherwise, you can generate these chips by removing the ferric sulfide from the surface. So how do we do it? Let me show you another diagram. Yeah. So what we do, we will pass the oxygen from these chips which have been coated by the ferric sulfide. So after this, the Fe2O3 will be regenerated again. Okay, and sulfur will be removed from the surface. So this sulfur again can be converted into sulfur oxide. So like that, I can regenerate them. And then you should also understand one more thing, that the regeneration step must be performed with great care, as the reaction with oxygen is exothermic, okay, which gives heat. So air must be introduced slowly from the surface so that the heat of reaction can be dissipated. If air is introduced quickly, the heat of reaction may ignite the bed. So that is another precaution, that the oxygen should be added very slowly. And from the diagram, I can also tell you one more thing, that in industry, there is also a practice that we allow the oxygen to go simultaneously, or you can actually have the oxygen purging after your sweetening process. So you can perform the regeneration in both ways. You can perform regeneration simultaneously during the actually sweetening process or desulfurization process. Otherwise, after desulfurization, you can again inject O2, and then you can actually regenerate the chips. But again, regeneration is not 100% possible. Some amount of H2S will always be there on the chips.
So by the time if you are going to use them in cycle again, you are going to repeat the process. The efficiency of the wood chips will slowly decrease. And after some time, you need not to again use them. You will remove them and you will install the new pack of chips. Okay. This is also written here that due to difficulty of controlling the regeneration step, the eventual coating of bed with elemental sulfur, the low cost of iron sponge material, and the possibility of hydrocarbon liquids coating the bed, iron sponge units are normally operated in the batch mode, as I told you. So you will have the another batch because of these problems. Some amount of hydrocarbon will also coat the bed. Sulfur is already there because of the coating. So the spent bed is removed from the unit and trucked to the disposal site. It is replaced with a new bed and the unit is put back to the desulfurization process. So there are two reactions involved. First, ferric oxide plus S2S, then ferric sulfide plus oxygen. So for that, we can actually perform the sweetening as well as regeneration together in a cycle, or you can perform the regeneration simultaneously also along with the natural gas. So you can inject O2, so sweetening will be there and regeneration will also be performed simultaneously. Okay, so this is about the iron sponge technique where we perform sweetening only for the H2S, and H2S should be in low amount because of the wood chip adsorption limits. So this is about the solid technique for the sweetening of natural gas. Now I would like to know if you have any questions, so you can ask me now. Yeah, this is a very selective process, or I can say absolute selective for H2S only, not for CO2. Okay, any question, any doubt, you can ask me. Okay, no more question. Any question? Yeah, I received one question from Amir. Water also comes down after the reaction. Uh, yes, you see from the reaction, Amir, on the page, water will also be removed. Okay, so this is actually removed from the bottom and it is going from here. So water is also there. So it means you can also understand that this process actually removes water also. So dehydration and desulfurization is performed together, but that process is not for the dehydration. But because of the reaction, water actually comes as a byproduct. We remove the water from the bottom. Anything else? So it's a byproduct from the reaction, and then we remove the water from the bottom and again regenerate the ships. Then we reuse them for the desulfurization process. So this is about the iron sponge process. If you have any doubt, you can let me know. So next adsorption technique on a solid bed is the use of molecular sieves. So this is another technique which uses these sieves, molecular sieves, and this method is based on the
size of the molecules. So this is for the removal of gases or these Char gases based on the size of the opening. So what does it do? Molecular sieve, as the name resembles, it uses a sieve of this kind. I hope you can see this slide. So it has so many holes. So depending on the size of the molecules, larger molecules will stay over there and the smaller molecules will pass through the molecular sieve. Okay, and these molecular sieve is like a porous manufactured. They are synthetically manufactured porous structures like this. So they have a pore openings based on the. It's like a membrane. So it membrane actually removes the different molecules gases based on the molecule size. So the size higher than the opening will actually stay there, and the lower size will actually pass through this. Okay. So what they do, they also absorb moisture and water from the substances to dry them completely. So this is also possible to remove water here also. The most common component used in these sheaves is zeolite. Zeolite based होती हैं, synthetically manufactured की जाती हैं, and based on the size of the molecules, they remove the natural these Char gases. ठीक है, और ये this method is useful to remove both water and this H2S and CO2 also. ठीक है, so this method is actually not selective method. This method is based on the size of the molecule of the acid gases. So based on the size of the acid gases, we can remove both. और water is also removed from this, तो drying भी मिलता है. In addition to drying gas, molecular sieve systems can be applied for sweetening gases, provided that the gas is almost dry and contains low concentration of H2S or CO2. तो दोनों के लिए काम करती है ये. तो based on the size, it removes the Char acid gases from the natural gas. ठीक है, so this is the molecular sieve technique. If you have any question, please let me know. Yes, I again received one question. Amir, sir, isn't the size of CO2 and the CH4 almost same? Is it, Amir? Is the size same for CO2 and CH4 molecules? How much? Yes, of course, there is no. But why you're talking about such a CH4? So therefore, I'm saying that we are actually not allowing the why are sieves described as a semi-solid? Because 1 minute, Arunima. So yeah, I'm having the answer. Sorry, question from the Amir. Is the size of CO2 and CH4 almost same? Therefore, I'm this method is can remove CO2, but again low concentration of CO2. Yes, Amir. Therefore, I'm saying this method is not the selective desulfurization or the adsorption of CO2. This method is again for the H2S, but it can remove CO2 also based on the size of the opening. So the CO2 lower diameter will be passed through the filter, but CH4 will not pass. So CH4 will stay there, and this gas will be removed based on the size of the opening. Second, if the CO2 is also going with CH4, suppose it is not passing and it is staying with the CH4. So again, this method is not for the selective adsorption of the H2S. This method, first of all, again for H2S के लिए है, but कुछ amount of CO2 based on the molecule size can be removed if it is in low concentration. But H2S removal is the main priority of this method also. CO2 यदि CH4 के साथ जाती भी है तो इतना इशू नहीं है. पहली बात, दोनों की कंसेंट्रेशन लो होनी चाहिए. वो मैंने पहले ही बोला, ये दोनों मेथड लो कंसेंट्रेशन पे हैं.
और अलाउ ये गैस को पास करने में नहीं करते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल को जो क्षार गैसेज हैं उनको अलाउ करते हैं पैसेज के लिए, CH4 को वहीं रोक लेते हैं। और जब CH4 वहां रुक जाता है दोनों ये रिमूव हो जाते हैं। और डिपेंडिंग कि आप किसके लिए कर रहे हो, इसलिए सिलेक्टिव कैप्चरिंग है नहीं, जिसका मॉलिक्यूल अलाउ हो जाता है वो पास हो जाता है, बट H2S के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है इसको। और कुछ वाटर भी रह जाता है तो वाटर रिमूवल भी इससे हो सकता है, बट अगेन दीज मेथड्स आर नॉट फॉर दी डिहाइड्रेशन पर्पज। सो डिहाइड्रेशन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दे may also stay, they may not pass through the opening, so वाटर रिमूवल भी हो सकता है थोड़ा बहुत। H2S और CO2 की कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे CO2 रिमूवल मैंने बार बार बोला है, CO2 रिमूवल is always not required, but H2S removal is required. So the objective is not to have H2S in CH4, but CO2 का कुछ अमाउंट चलेगा, चल जाएगा। CO2 is allowed. अच्छा, then I have one more question. Yeah, so these are the actually Arunima, they are not the pure solid form में नहीं आते हैं। सेमी सॉलिड इसलिए रखते हैं इसको क्योंकि हम इनको डिसॉल्व कर सकते हैं बाद में किसी दूसरे सॉल्वेंट में, और फिर से ये जो सीव है ना, इसमें जब टेम्परेचर आप देते हो तो H2S रिमूव हो जाता है। तो प्योर सॉलिड में नहीं यूज करते हैं। तो दो एडवांटेज है कि इस मेटल को, इस मटेरियल को आप फिर से गर्म करके सॉल्यूशन में ला सकते हो, सॉल्यूशन फॉर्म में, और फिर उनको आप फिर से सिंथेटिकली डिजाइन कर सकते हो। इसलिए इनको सेमी सॉलिड पोरस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दे आर लुक लाइक फिल्टर्स, तो दे लुक लाइक फिल्टर्स। तो इसको सेमी सॉलिड, और कंपोजिट मटेरियल है ये, डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है। जैसे मैंने आपको बताया जियोलाइट इसका मेन कंपोनेंट है, और कुछ कैल्शियम भी इसमें यूज होता है, सिलिकेट्स भी इसमें डाले जाते हैं। तो उसके बेसिस पे ये कंपोजिट मटेरियल बनता है विच इज सेमी सॉलिड, नॉट प्योर एंटायरली सॉलिड। क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ, ये जितनी भी टेक्निक है ना, दे कैन बी बेस्ड ऑन दी, जैसे मैं नेक्स्ट डायग्राम में जो फ्लो स्कीम है, दिस फ्लो स्कीम इज यूज्ड फॉर दी बैड रीजनरेशन बाय हीटिंग। तो जहां पर आप देख रहे हो तीनों डायग्राम में, इसमें ये बैड है जिसमें आपने एड्जॉर्प्शन किया होगा, एंड बैड को रीहीट करते हैं हम लोग। तो रीहीट करने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो H2S छूट जाता है। हीटिंग टेम्परेचर के बेसिस पे H2S लीव्स दी सरफेस, तो उसका स्वीटनिंग कर देते, सॉरी स्वीटनिंग के बाद उसकी हीटिंग करने से हम रीजनरेशन ले लेते हैं। तो इसमें आपको दोनों दिख रहे होंगे। देन थर्ड जो दिख रहा है, इसमें कूलिंग करते हैं बेड को, और कूल करने के बाद फिर से इसको यूज करते हैं स्वीटनिंग चैम्बर में। तो तीनों चैम्बर आपको साइमल्टेनियसली दिख रहे होंगे इसमें। तो स्वीटनिंग में यू विल रिमूव दी रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ द क्षार गैस, हीटिंग में यू विल रीजनरेट द बेड, and then cooling में you will reduce the temperature up to the required temperature which is required for the sweetening or the desulfurization purpose. तीनों स्कीम में आप देख सकते हो रीजनरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि these are very very important components और सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सो इफ वी कैन रीजनरेट देम दैट इज वेरी वेरी बेस्ट। रीजनरेशन एफिशिएंसी डिपेंड्स करती है आप कितनी अमाउंट, और बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि H2S का लार्ज अमाउंट इसमें नहीं यूज हो सकता है। H2S का बल्क रिमूवल इज ओनली पॉसिबल बाय द लिक्विड टेक्निक। तो सॉलिड मेथड जो है इसलिए ऑब्सोलीट भी हो गए हैं इंडस्ट्री से। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो सॉलिड मेथड है दे आर नॉट कैपेबल टू रिमूव बल्क अमाउंट ऑफ H2S, दे आर जस्ट। और सेकंड, इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्लांट है, दे हैव बिकम वेरी ऑब्सोलीट, लो कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। जो अभी एडवांसमेंट में है वो है सब लिक्विड टेक्निक, जिसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन हैज रिसीव्ड सो मच अटेंशन, क्योंकि उसका रिमूवल टेक्निक बहुत अच्छा है और उसका रीजनरेशन भी बहुत स्मूथ है, और लिक्विड है तो रीजनरेशन भी इन सॉलिड बेड से ज्यादा आता है। तो ये सब ओल्ड मेथड है जिसमें रीजनरेशन का इशू रहता है। और देन यू कैन नॉट अगेन रीयूज दी चिप्स और आयरन these beds of molecular sieves after certain time or after certain cycles। तो ये दो टेक्निक हैं जिसमें हम सॉलिड
बेड पे पार्टिकल के साइज, सॉरी गैसेस के साइज पे वी डोंट अलाउ दी दिस H2S एंड CO2 पास, वो बाकी सब निकल जाता है, ये दोनों रुक जाते हैं। और कुछ समटाइम्स कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स भी रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर साइज, तो वो भी रुक जाते हैं, तो ड्राइंग भी हो जाता है और कुछ लो अमाउंट ऑफ H2S रिमूव भी हो जाता है। इवन मैं आपको एक ऐसा भी केस दिखाऊंगा इंडस्ट्री में जहां पर जो ओल्ड बेस्ड हैं, नाउ दे आर डूइंग पार्शियल स्वीटनिंग इन दी partial shooting by the solid method, and then the remaining gas which is going from the bottom of this plant will go to the chemical plant for the entire removal of H2S. तो sometimes इसको हम एज ए हेल्पिंग में भी यूज करते हैं इफ द प्लांट अलाउज। तो पहले आप थोड़ा सा H2S यहाँ से रिमूव कर लो, फिर केमिकल टेक्निक में उतना बर्डन नहीं आएगा जितना हम सोच रहे हैं, या जितना when you are having huge bulk amount of H2S to remove, तो थोड़ा सा पार्सल शूटनिंग यहाँ कर लो और बाकी फिर एमीन बेस्ड या केमिकल बेस्ड होगा। ठीक है। यस आई अगेन यस सर, व्हाई इज देयर ए कूलिंग यूनिट? देखो आमिर, यहाँ पर आपका स्वीटनिंग होगा। स्वीटनिंग जो है इट इट अलाउज अस टू हीट इट अप टू सर्टेन टेम्परेचर। जैसे स्वीटनिंग किसी एक टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, तो इस स्वीटनिंग के लिए आप सपोज यहाँ पे जो भी मेंटेन करते हो, इट इज अलाउ आई थिंक 400 नहीं, इट इज अलाउ आई थिंक 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चाहिए इस स्वीटनिंग चैम्बर में। तो वो जो टेम्परेचर है उस वो अलग है, और हीटिंग में जो है वी रीहीट अप टू दिस बेड, यहाँ पे हीटिंग करते हैं, इसका टेम्परेचर होता है करीबन 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 500 पे भी शायद है, 500 डिग्री फ़ारेनहाइट भी काम करते हैं। तो हीटिंग का जो यूनिट है दैट इज यूज टू क्या कहते हैं उसको, रीजनरेशन के लिए। जैसे ही हीट करते हैं एस्पेस इससे रिमूव हो जाती है बेड से, और देन जब आपका टेम्परेचर इतने पे आप हीट करते हो, तो देन यू विल इधर अलाउड टू कूल इट नेचुरली, और अदरवाइज यदि आपको साइमल्टेनियसली जल्दी जल्दी कूल करना है, इसलिए साइकिल में लगे हुए हैं, तो आप इसको तो जल्दी से डाउन करके 110 और 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लाओ, और देन स्वीटिंग चैम्बर में फिर से यूज कर लो। अदरवाइज 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके आपको आना पड़ेगा 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। So, या तो उसको नेचुरली कर लो या फिर उसको कूल करो तो जल्दी हो जाएगा, एंड देन इमीडिएटली यू कैन यूज दी दिस बेड और दिस मॉलिक्यूलर सीव इन दिस स्वीटनिंग चैम्बर। तो इसलिए हम कूलिंग करते हैं, बीच में रीजनरेशन करते हैं, और इधर हम डीसल्फराइजेशन करते हैं। तो साइमल्टेनियसली सब होता रहता है। अदरवाइज प्रोसेस विल, जैसे ये भी हो सकता है कि आप सपोज वन बेड इज यूज्ड इन स्वीटिंग चैम्बर, अनदर बेड पे हीटिंग हो रहा होगा, और थर्ड बेड पे कूलिंग चल रही होगी, विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो आप फिर इमीडिएटली स्वीटिंग चैम्बर में इसको शिफ्ट कर दो, स्वीटिंग वाला हीटिंग में जाएगा और हीटिंग वाला कूलिंग में जाएगा। तो इसलिए तीनों चैम्बर को एक साथ यूज करते हैं इसमें। एनी अदर क्वेश्चन? There are two old methods which are solid technique. First is iron sponge, second is molecular sieve. So उनके मैंने आपको फ्लो स्कीम भी दिखाए हैं, उनके नोट्स भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा हाईलाइटेड फॉर्म, वहां से भी पढ़ लेना। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ और लेटर। अब नाउ if there is no more question, let us start the discussion on the liquid technique. तो ये सबसे एडवांस्ड हैं और हमारे इंडस्ट्री में अभी भी यही चल रहे हैं, और सबसे एडवांस्ड हैं बिकॉज उनका रीजनरेशन स्कीम बहुत स्मूथ है, और जो एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया है वो भी बहुत यूनिक है। और एब्जॉर्प्शन या फिर आप बोल दीजिए जो H2S रिमूवल है या CO2 रिमूवल है, वो वो इट्स बेटर देन द सॉलिड मेथड। तो सॉलिड मेथड ऑब्सोलीट है थोड़े से, और लिक्विड मेथड में बहुत सारे सॉल्वेंट्स आ गए हैं आजकल, और जो चीपर हैं और रीजनरेशन भी उनका पॉसिबल अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए लिक्विड टेक्निक्स, और लिक्विड में मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे केमिकल
absorption also plays very important role. Chemical absorption is better than the physical absorption, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो स्ट्रेस ट्रैप होती है ना, दैट इज नॉट एंटायरली ट्रैप्ड, और उसका जो स्टेबिलिटी है इन द ट्रैपिंग चेन्स ऑफ द सॉल्वेंट इज आल्सो नॉट स्टेबल, तो इसलिए एस्ट्रेस कंटिन्यूसली रिमूव भी होती रहती है। तो हमें ट्रैपिंग एस्ट्रेस की सॉलिड कर स्टेबल करनी है, सो दैट अगेन वी कैन यूज दिस एस्ट्रेस टू कन्वर्ट इनटू सल्फर, और देन फिर डिस्पोजेबल साइट पे उसे डाल देंगे, क्योंकि एस्ट्रेस का जितना ज्यादा आप रिमूवल कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अदरवाइज वो लीक होता रहेगा, या फिजिकली उतना ट्रैपिंग नहीं होता है जितना केमिकल होता है, क्योंकि वहां पर ट्रैपिंग रिएक्शन के थ्रू होती है, इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ट्रैपिंग। इसलिए केमिकल बेस्ड टेक्निक्स आर इन द फैशन इन द इंडस्ट्रीज। इन केमिकल बेस्ड टेक्निक्स में सबसे पहले हम फिजिकल टेक्निक ही देखेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले सॉल्वेंट वाटर, जो सबसे सिंपल मेथड है। इसमें सबसे सिंपल मेथड है वाटर वॉश प्रोसेस। तो वाटर वॉश प्रोसेस सिंपली आप जस्ट वाटर से वॉश करते हो नेचुरल गैस को, और वाटर जो है एसिड गैसेस से रिएक्ट करता है और उसके कंपोनेंट को रिमूव करता है। दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड, दिस इज अगेन नॉट बाय एनी केमिकल रिएक्शन, दिस इज अगेन बाय द सिंपल फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, absorption not absorption, it's a physical absorption technique. So what do we do here? Let me show you the diagram or plan. So in this, carefully you can see, I think this slide is visible. In this slide, is this slide visible? Okay, so in this you can see there is yeah, okay, thank you. There is there is an absorption column in the left hand side. So you can remember again the glycol plant, which we have discussed already for the dehydration. So similarly here we use a water as a solvent. तो जैसे मैंने उसमें ग्लाइकोल टॉप से डाला था और नीचे से आप शार गैस फीड कराते हो, तो सिमिलरली इस एब्जॉर्प्शन कॉलम में आप फीड गैस शार गैस होती है और वाटर ऊपर से आता है, ठीक है। और काउंटर करंट होने की वजह से द वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिड कंपोनेंट्स, एसिड गैस कंपोनेंट्स, एंड एब्जॉर्ब देम। सो पार्शियली जो एब्जॉर्ब होगा वो फिर रिच सॉल्वेंट होगा। रिच सॉल्वेंट क्या, रिच वाटर होगा वो। देन इट गोज इन अनदर टैंक, फ्लैश टैंक। जो टॉप से है दैट इज एक्चुअली पार्शली स्वीट गैस। पार्शली क्यों, मैंने फिर बोला, क्योंकि ये सब एब्जॉर्प्शन बेस्ड पे है। दिस इज एक्चुअली दी लिक्विड टेक्निक, बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये, नॉट केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से जो गैस निकलती है वो खाली पार्शली स्वीट होती है, देन अगेन इट इज गोइंग टू दी अमाइन यूनिट, और अमाइन यूनिट इज दी सुपीरियर सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज। तो अमाइन बेस्ड प्लांट्स आपको डीसल्फराइजेशन में सबसे एडवांस्ड हैं, दे आर द बेस्ट सॉल्वेंट्स। तो वाटर इज आल्सो ए सॉल्वेंट, बट उसका एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल इज नॉट एज हाई एज अमाइन सॉल्वेंट्स हैव। तो पार्शियली स्वीट हुआ, देन उसके बाद अमाइन की जो यूनिट है उस पर लोड कम आएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा स्वीटनिंग पहले वाटर से कर लेते हैं, और उसके बाद जो पार्शियली स्वीट गैस है इट इज नाउ गोइंग टू दी अमाइन यूनिट फॉर द एंटायर रिमूवल ऑफ द एसिड गैस। सो जैसे मैंने बोला ना कि you can use the like the solid technique which is able to remove the H2S in low amount only. So byproduct side में use कर सकते हो, then the partially sweetened gas can be used in the main plant, and main plant में already इतना huge investment होता है, तो if you can remove some amount of H2S तो burden यहाँ पे remove हो जाएगा। तो solid method available है तो उसको as a साइड में यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने इसमें भी एक बताया कि वाटर टेक्निक भी एक टेक्निक है, बट इट डज नॉट रिमूव द एंटायर एसिड गैसेस फ्रॉम द शार गैस, तो इसलिए हम फिर उसके साथ में अमाइन यूनिट भी यूज करते हैं। बट दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दी अगेन दिस जो हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोल में। एक एब्जॉर्प्शन कॉलम आपको दिख रहा होगा, टॉप से आपके पास पार्शियली स्वीट गैस निकलती है और बॉटम से रिच वाटर निकलता है, रिच सॉल्वेंट बोल दीजिए,
and then it goes in a flash tank, intermediate flash tank. So based on this, again कुछ amount of acid gas or hydrocarbon based on the pressure they will be removed, and they are also going to amine unit. तो जो थोड़ा बहुत भी बचेगा वो लो प्रेशर फ्लैश टैंक में निकल जाएगा, और यहाँ से जो पानी निकलेगा दिस विल बी अगेन सेंटर एंड इट विल बी लीन, और अगेन ये हीट तो टेम्परेचर होगा तो फिर हम इसको कूलिंग भी करेंगे, देन कूल करके फिर लीन वाटर इज इंजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ एब्जॉर्बर, और ये जो यहाँ से निकलती है दैट इज विल बी इन वेरी माइन्यूट अमाउंट एसिड गैस एंड इट इज सेंड डायरेक्टली टू द सल्फर प्लांट टू कन्वर्ट H2S into the sulfur. ठीक है, so this is one of the method, it is called water wash method, and very simple method है, just आपको पानी से क्लीन करना है, और क्लीन करने therefore it is also called water cleaning process. इसमें गैस की थोड़ी amount of H2S you can remove, and then the remaining gas you can send to the sweet gas, जो partially sweet gas है, to the amine unit for the chemical absorption. ठीक है, तो दिस इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेक्निक बाय लिक्विड्स, ये एक मेथड है, ये यूज होता है, ये साइड में यूज होता है एज टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द मेन अमाइन प्लांट. ठीक है, और दो फ्लैश टैंक लगे होते हैं ऑफ डिफरेंट प्रेशर्स, तो प्रेशर के बेसिस पे वी विल रिमूव द कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड द एसिड गैस फ्रॉम द वाटर. तो क्योंकि हमें वाटर रीजनरेट भी करना है, सो आई कैन से राइट हैंड साइड आई हैव द वाटर रीजनरेशन प्लांट, okay, and left hand side I am having the desulfurization column. ये absorption column इधर है, right hand side में water regeneration है, तो then water regenerate हो जाता है, and then we are again injecting this in the absorption column. ठीक है, another important process जो इंडस्ट्री में यूज होता है that is the selection process. So if you have any doubt, you can ask me. So far I have discussed water wash. This is again Arunima not for CO2, not for CO2. CO2 का रिमूवल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. This selection is for CO2. So this water wash a selective process नहीं है. Just it cannot actually help you with the selection. क्योंकि वाटर किसी के साथ सिलेक्शन नहीं देगा. हाँ, इफ यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया सिलेक्शन, एमाइन तो दोनों को ही रिमूव कर लेते हैं, बट दिस वाटर इज जस्ट बेस्ड ऑन द रिएक्शन, और जिसको भी पर्टिकुलरली हम H2S के लिए ही यूज करेंगे यहाँ पे भी इसको. तो CO2 का रिमूवल मैंने फिर से बताया आपकी सेलेक्टिव ट्रैपिंग नहीं है, ये सब फिजिकल एब्जॉर्प्शन है. तो डिपेंड्स कि आपके पास H2S अपॉन CO2 का क्या रेशो है. इफ यू कैन अलाउ CO2 इन दिस नेचुरल, इसलिए इसमें क्या है, आप जो फर्दर रिमूवल होगा वो अमाइन में होगा. यहाँ पर आप खाली दोनों गैसेज में से कोई ट्रैपिंग सेलेक्टिव नहीं है, जिसके साथ भी वाटर रिएक्ट करके रिमूव कर सकता है उसको रिमूव कर लेता है. और पर्टिकुलरली मैं तो ये भी बोलता हूँ इस टेक्निक में, इफ यू रीड द कंटेंट ऑन दिस मेथड, CO2 अमाउंट शुड बी लो हियर. ओके, CO2 अमाउंट लो होना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ CO2 रिएक्शन भी करता है और देन एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है विच इज लाइक ए कोरोजन. तो ये जो है, ये CO2 का लिटिल अमाउंट कैन बी देयर, बट इट इज पर्टिकुलरली टू रिमूव द एसिड गैस विच इज H2S, और इसलिए यहाँ पे दिखाया है सल्फर प्लांट. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि CO2 रिमूवल depends on the purpose. If you really want to remove it, then you will actually think about this. Otherwise CO2 रिमूवल के लिए कोई ऐसा मतलब हम डीसल्फर, क्योंकि द वर्ड इज ऑलरेडी डीसल्फराइजेशन, सो द टेक्निक और द मेथड्स आर पर्टिकुलरली डिजाइन्ड फॉर द एसिड गैसेस, बट इन एसिड गैसेस H2S इज द प्रायोरिटी, क्योंकि H2S कैन नॉट बी एक्चुअली सस्टेन्ड, और वो बहुत ही पॉइजनस गैस है. CO2 पॉइजनस नहीं है, ठीक है, बट इफ यू स्टिल वांट टू रिमूव CO2, देन देयर आर सम मेथड्स. वो सेलेक्टिवली CO2 ही रिमूव कर सकते हैं, ऐसे भी मेथड आते हैं, H2S नहीं छेड़ेंगे. बट अगेन मैं बोलता हूँ डीसल्फराइजेशन या फिर आप एसिड गैस की रिमूवल की जब भी बात करोगे, यू विल नॉट काउंट CO2, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू CO2 कैन बी देयर इन द नेचुरल गैस, इट जस्ट अफेक्ट्स द कोरोजन
इट गिव्स दी हीटिंग कंटेंट कम कर देता है, और कुछ इश्यूज आते हैं हाइड्रेट बनने में। तो वही 3-4 इशू रहते हैं, बाकी इट्स नॉट ए पॉइजनस गैस। So main idea है to remove the poisonous gas and convert it into the sulfur so that we can dispose this in the disposable sites. ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ओनली डिजाइंड मेनली फॉर दी H2S। यहाँ इसके बाद जो भी गैस है, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड एंटायरली फ्रॉम हियर, द गैस विल बी सेंड टू द मेन प्लांट विच इज एमाइन प्लांट। तो ये एमाइन यूनिट में जाएंगे, वहां पर आपको दोनों ही रिमूव होंगे, वहां पर आप दोनों ही रिमूव कर सकते हो। ओके, बट आई एम अगेन पॉइंटिंग CO2 रिमूवल इज नॉट द मेन प्रायोरिटी। इवन CO2 गैस के आती भी है CH4 के साथ आगे, और बस उसकी हीटिंग वैल्यू कम करती है, समटाइम्स कोरोजन डेवलप करती है। इसलिए दिस मेथड्स इट कैन हेल्प एज ए साइड में हेल्प कर सकते हैं CO2 रिमूवल पे। तो वो अमाइन के साथ पॉसिबल है, एंड अमाइन इज वेरी वेरी एडवांस टेक्निक इन इंडस्ट्री। उसमें आपको दोनों सारे रिमूवल मिलते हैं, और इट्स ए केमिकल रिएक्शन बेस्ड, तो दैट इज बेस्ट रिमूवल टेक्निक। Yes, anything else? So I have 5 minutes more. If you, so I thought this method, this process, and the last amine process I will discuss tomorrow. So I would like to stop here. So I have discussed 3 methods today. I will send you the notes also. So this is first I have discussed the iron sponge method. Then I have discussed the molecular sieve method. Then I have discussed the physical absorption in water. तो तीनों में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन अगेन डिस्कस विद मी। सो डीसल्फराइजेशन इज लास्ट। इसके बाद थोड़ा सा और एक और टॉपिक बचा है इसमें भी, CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो इसके बाद चालू करूंगा मैं, तो प्रॉब्ली कल ये खत्म हो जाएगा। CGD आई थिंक आई विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस टुमारो। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एडवांस चल रहा है अभी, इवन इसमें जॉब भी मिल रही है। और सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स फॉर दी सिटी गैस, वो सब मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो सब इसके बाद आएगा। जब आप सारे प्रोसेस कर लोगे ना प्लांट में, आपने डिहाइड्रेशन भी देख लिया, कंप्रेशन भी देख लिया, डीसल्फराइजेशन भी कर दिया, उसके बाद जो गैस कस्टमर को जाती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है इन ग्रिड फॉर्म में इन सिटी, तो वो सब डिस्कस होगा इसके बाद। तो पूरा आपके पास ऑफशोर से लेके यूटिलाइजेशन तक का प्रोसेस में जो जो बीच बीच में प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब डिस्कस किए हैं मैंने। डिहाइड्रेशन हो गया, डीसल्फराइजेशन हो गया, गैस कंप्रेशन तो डिटेल में डिस्कस हुआ कि गैस को कंप्रेस भी करना पड़ता है टू सेंड इट टू द कस्टमर। तो कहीं पे इसमें कोई, तो अब ये डीसल्फराइजेशन लास्ट प्रोसेसिंग होता है जब आप सल्फर रिमूव करते हो। तो सल्फर रिमूव करने में जो जो मेथड हैं मैंने आज 3 डिस्कस किए हैं, 2 और बचे हैं इसमें, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask me now. Yes, any question, any doubt? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, then remaining 2 processes will be discussed tomorrow. ठीक है, bye everyone.